the about parts of the Indian Constitution. Okay, we have seen that there are 22 parts in the Indian Constitution. 22 parts. Okay, now let us see one by one. Okay, part one. Part one talks about the Union and its territory. Okay, and part one consists article number 1 to 4. Article number 1 to 4 are included in part 1. Okay. Then article number 2 deals with name and territories of the union. Okay. And establishment of new states. Okay. Then article 3 uh, gives the provisions of formation of new states. Then Article 4 provides the amendment of the first and fourth schedules and supplemental, etc. Okay. Now part 2. Part 2 talks about citizenship. Okay. Article 5 to 11 are included in part 2. Okay. Then part 3. Part 3 talks about fundamental rights. Okay, part 3 deals with fundamental rights, and article 12 to 35 are given in part 3. Okay, article 12 to 35, article numbers 12 to 35 are given in part 3. Okay, you might be knowing about fundamental rights of Indian citizen, like right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, etc. Okay, these are all fundamental rights of Indian citizen. Okay, and these fundamental rights are given in part 3. Okay, now let us see part 4. Part 4 talks about directive principles of the state policy. It includes articles from 36 to 51. Okay, article 36 to 51 are included in part 4. Okay, now yeah, no need to have a detailed information. Now let us see part 4. Part 4 talks about, oh no, what is this? It must be, yes, 1 second. Now part 5 talks about the union. Okay, the part 5 contains 5 chapters related to individual subject. Okay, chapter 1 is titled as the executive. Okay, and it contains article 52 to 78. Article 52 to 73 deals with the powers and functions of the president and vice president, and article 74 and 75 provides the formation of council of ministers and its functions. Okay, now let us talk about part 6. Okay, part 6 talks about the states. Okay, uh, this sixth part contains 6 chapters, and it contains article 152 to article 237 regarding the state level provisions. What kind of provisions should be there in every state? Okay, that those provisions have been given here. Okay, then next part 7. Part 7 actually, this has been cancelled or repealed as per article number 238 and 7th Constitutional Amendment Act 1956. ये जो पार्ट 7th है, इसको मतलब कैंसिल किया गया है. ओके, रद्द कर दिया गया है.
as per Article number 338 and 7th Constitutional Amendment Act 1956. Now Part 8 talks about the Union Territories. It contains Article 239 to 242. Okay. Then Part 9 talks about the Panchayats. Okay, Part 9th जो है, it talks about Panchayats. Okay, it contains Article 243. Okay, here in this part, in 9th part, Panchayat Raj and local self-government. It explains Panchayat Raj and local self-government. Okay. Then Part 10 contains Article 244. Okay, where we find the provisions of administration of scheduled areas and tribal areas. Okay, such as in Assam. ठीक है. Then Part 11. Part 11 talks about, Article 245 to 255. Okay, and these articles provides for the powers of Parliament and state legislature. Then Part 12. It explains. Part 12 explains about finance, property, contracts, and suits. Okay, and this part contains Article 264 to Article number 300. Okay, now let us see Part 13. Part 13 titled as Trade, Commerce, Intercourse within the Territory of India. Okay, and this 13th part contains Article number 301 to 307. Okay, where provisions are made for freedom of trade, commerce, powers of Parliament to impose restrictions, etc. Then Part 14 talks about services under the Union and the states, and this part is divided into two chapters, and Part 14th consists of Article number 308 to 323. Now Part 14A. Part 14A, it's Articles 323A and 323B are provisions of administrative and other tribunals, having the provisions of administrative and other tribunals. Then Part 15 is titled as elections. Okay, and it contains Article 324 and 329. It has the provisions of election commission. Part 15 having the provisions of election commission. Okay, now let us talk about Part 16. Part 16 talks about special provisions relating to certain classes, and this part certain classes in the sense reservation of seats for SCs, STs, okay, Anglo-Indians, etc. Okay, then this part 16 contains Article number 330 to 342. Then Part 17 talks about official languages. Okay, and Part 17 having 4 chapters. Part 17 contains Article 343 to Article 351. Okay, now Part 18, it talks about emergency provisions. This contains Article number 352 to 360. Okay,
This means part 18 talks about emergency provisions, okay, such as national emergency, emergency due to constitutional failure in state, and financial emergency respectively. Sorry. Then part 19, okay, part 19, it talks about miscellaneous, okay, it contains 361 to sorry 361 to 367 article 361 to 367. Part 20 talks about amendment of the constitution and this contains article 368. Now part 21, titled as temporary, transitional and special provisions, lies between articles 369 to 392. Then part 22 is titled as short title, commencement, authoritative text in Hindi repeal such as Indian Constitution, etc. Article 395 is repealed from this part. Okay. Now let us talk about schedules. Okay, schedules in the Indian Constitution. Just we talked about it. What? There are 12 schedules in Indian Constitution. Okay. Now let us see one by one. Now let us talk about schedules of Indian Constitution. Just we talked about it. There are 12 schedules in the Indian Constitution. Okay. Now let us see one by one. Now let us see first schedule. Article 1 to 4 are included in first schedule. तो ये जो फर्स्ट स्केड्यूल है बच्चों, इसमें क्या दिया है कि जो भी बॉर्डर्स है, इंडियन बॉर्डर्स, ओके, कि फॉर एग्जांपल जो राज्य क्षेत्र है, ओके, स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो उनकी जो बॉर्डर्स है उनके बारे में कुछ प्रावधान किया गया है, कुछ प्रोविजंस बनाई गई है, तो वो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इन फर्स्ट स्केड्यूल. ओके, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट, दिस इज महाराष्ट्र स्टेट. ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट के यदि आप लोग साउथ में देखोगे तो यहाँ पे कर्नाटका स्टेट इज देयर. ओके, इन दैट वे. ओके, तो ये जो इनकी बॉर्डर्स है इनके बारे में कुछ प्रोविजंस बताई गई हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. नाउ सेकेंड स्केड्यूल्ड. ओके, आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221, ये आर्टिकल्स जो है सेकेंड स्केड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं. ओके, तो ये जो आर्टिकल्स हैं या तो ये सेकेंड स्केड्यूल जो है, इट टॉक्स अबाउट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस. ओके, जजेस, कंट्रोलर्स, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो इनके बारे में जो भी सैलरीज है इसके बारे में ये जो भी है तरतूद की गई है, प्रोविजन बनाई गई है. ओके, हाँ. देन हाँ, इनका फंक्शन वगैरह ये सब इसमें दिया गया है. नाउ लेट अस सी थर्ड शेड्यूल. आर्टिकल्स 75, 99, 124, 148, 164, 188, 219. ओके, ये जो आर्टिकल्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन थर्ड शेड्यूल्स. ओके, तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों कि जो भी इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, ओके, जो भी इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनके बारे में मतलब उनको ऑथ लेनी पड़ती है. ओके, तो वो जो ऑथ होती है हर इलेक्टेड पर्सन की अलग अलग होती है ना.
तो ऑथ के बारे में यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया है। ओके, मतलब यहाँ पे ऑथ ऑथ के नमूने पेश किए, नमूने तैयार किए हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि वो यदि इलेक्ट होते आते हैं तो फिर वो शपथ लेते हैं। ओके, तो सब थर्ड शेड्यूल के अंडर दिया गया है। देन फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट allocation of seats in the Rajya Sabha, okay, per state and union territory. Okay, तो इसमें तो इसमें मतलब यूनियन टेरिटरी में या स्टेट गवर्नमेंट में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं या तो कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, उनका नंबर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में कितने सीट्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, इन दैट वे। देन फिफ्थ शेड्यूल, आर्टिकल 244 included in fifth schedule. This provides for the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. Then sixth schedule, Article 244 and Article 275 are included in sixth schedule. Okay, provisions are given. Okay, provisions for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Okay, इन एरियाज में जो भी ट्राइबल पीपल है उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। ओके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनमें कुछ आदिवासी जनजाति है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। ओके, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। नाउ सेवेंथ शेड्यूल जो है, इट टॉक्स अबाउट द यूनियन। ओके, state and concurrent list of responsibilities, etc. Okay, then schedule 8, articles 344 and 351 are included in 8th schedule. Okay, 8th schedule talks about the official languages. Then 9th schedule, article 31b included in 9th schedules. Okay, here articles mentioned here are immune from judicial reviews. Okay, मतलब जो भी okay, now 10th schedule, articles 102 to articles 191, articles 102 and article 191 are included in 10th schedule. ओके, यहाँ पे क्या है कि एंटी डिफेक्शन, मतलब कोई भी यदि ऐसे मेंबर्स की जो पार्लियामेंट के हैं या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके, तो वो यदि अपात्र हैं, ओके, तो उसके बारे में, मतलब उनके बारे में क्या प्रोविजंस बनाई गई हैं। ओके, तो इसके बारे में ये 10th शेड्यूल कहता है, बताता है। The next 11th schedule. 11th schedule talks about Panchayat Raj. 12th schedule, it talks about municipalities. Okay, 11th schedule talks about Panchayat Raj. Article 243G talks about Panchayat Raj. यहाँ पे पंचायत राज जो है, which is rural local self government. 11th schedule talks about rural local self government, that is Panchayat Raj, and 12th schedule talks about municipalities, urban local self government. Okay, now let us talk about amendments in Indian Constitution. Okay, now let us see amendments in Indian Constitution. ये अमेंडमेंट्स क्यों बनाए गए हैं बच्चों? कि अमेंडमेंट मतलब क्या कि उस मतलब जो पहले के जो भी है एक्ट्स, लॉज वगैरह, ओके,
which are given in the constitution. तो कुछ पर्पस के कारण ओके उनमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं. ओके यदि कोई एक प्रोविजन है उसको निकाला जा सकता है या तो मतलब कैंसिल किया जाता है किसी प्रोविजन को, या कोई प्रोविजन ऐड की जा सकती है और वो अमेंडमेंट करके सामने आता है. टिल मार्च 2020 मार्च 2020 तक कितने अमेंडमेंट हुए थे बच्चों अपने? एक्चुअली 104. ओके 104th अमेंडमेंट आए थे. ओके नाउ so that is called what? Amendments. Okay. Now appendices. Let us talk about appendices. Okay.